Hi, sir. So, sir, right now you have come up with your own GCC policy. Punjab has got its own GCC policy. So, why Mohali has been chosen as the destination for GCCs along with the Chandigarh Tri-City? See, Mohali and Chandigarh, they offer, I think, one of the best places for the investors, especially for GCCs. अब अगर हम GCCs की बात करते हैं तो what GCCs basically want, उनकी रिक्वायरमेंट है कि एक अच्छा कंजीनियल एटमॉस्फेयर है, जो कि चंडीगढ़ भी वन ऑफ द आई थिंक इज द सिटी ब्यूटीफुल, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मोहाली ऑफर्स ह्यूमंगस अपॉर्चुनिटीज इन फॉर्म ऑफ लाइक हमारे पास टैलेंट पूल वो बहुत ज़्यादा है. ऑलरेडी मोहाली में 1.2 लाख professionals they're working for it, and scalability के chances हैं because ample land available. Right. हमारी जो policy है जो we got it 6 months back, उसमें incentives हम बहुत ज़्यादा जो है वो दे रहे हैं, rentals में दे रहे हैं, stamp duty में दे रहे हैं, जो per month salaries हैं उसमें दे रहे हैं. So I think और अब ज़्यादा मेरे ख्याल से Tier 1 या Tier 2 सिटीज़ में ज़्यादा फर्क नहीं रह गया, और लाइफस्टाइल डेफिनेटली चंडीगढ़ मोहाली दे ऑफर द बेस्ट प्लेस. सो आई थिंक हर तरफ से फ्रॉम ऑल साइड्स मोहाली एंड चंडीगढ़ दे ऑफर the best. Right. And you know, when we talk about the GCCs, any target that you have in mind, like, you know, this many GCCs you would like them to come to your state by 2030 or something like that? तो जितने ज़्यादा होंगे उतना कम. नहीं, वो तो जरूर. Targets are like endless. Sky is the limit, and जितनी opportunities हैं चंडीगढ़ मोहाली के पास, उतनी I think और किसी के देखिए चाहिए क्या, आपको एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड चाहिए जो चंडीगढ़ मोहाली ऑफर कर रहे हैं. आपको रिटेंशन के लिए हमारे अगर आप ग्लोबली देखें, आई थिंक 15-20% ऑफ वर्कफोर्स इन ऑल IT कंपनीज दे आर फ्रॉम पंजाब और फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, सो दे वांट टू कम बैक. और उसके अलावा एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि ऑल एंड आउट टू सपोर्ट. सो आई थिंक फ्रॉम एवरी एंगल वी हैव द बेस्ट. Right. तो ये जो आपने बोला कि the talent that has moved out of Punjab and you want to bring them back, and you're giving a lot of incentives. Also at the same time, are you trying to create this new age talent जैसे AI, quantum? अभी जैसे all over India we are seeing that everybody is focusing on building that talent, and GCCs are also they want that AI talent. So what are your initiatives regarding that? How you will train the talent? देखिए इसमें लाइक पंजाब हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट कि जहाँ पे सेकेंडरी लेवल स्कूल्स में भी वी हैव इंट्रोड्यूस्ड AI. Right. Apart from that, we have 25 incubation centers. We have about 30 universities. Recently, we introduced 3 digital universities. We gave clearance, our cabinet gave the clearance. We have around 190 engineering colleges, 350 ITIs. We have Plaksha, we have ICER, we have IBM, we have IIT Ropar, we have PEC. So, like, there is no dearth of places which can train for ITI, for AI. And also, when you focused on employment subsidy as a major initiative, was there any reason, like कुछ तो सोच के you might have focused on that as one of the primary key offerings? देखिए यही सोचा था कि क्योंकि हर एंगल से चंडीगढ़ मोहाली एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है टू प्रमोट एंड टू अट्रैक्ट ऑल दीज GCCs एंड कंपनीज. सो उसी के हिसाब से आई थिंक ये मेरे ख्याल से और कोई भी स्टेट ऑफर नहीं कर रही होगी कि सैलरी में गवर्नमेंट पार्टिसिपेट कर रही है, दैट टू फॉर 5 years. राइट. आई थिंक यही था कि सारी की सारी कंपनीज, क्योंकि टैलेंट की कोई कमी नहीं, दैट आई मस्ट से. Right. And because Punjab has always been known as an agriculture state, so how what you're going to focus on in the coming years. Will it be cybersecurity, will it be manufacturing, will it be electronics, semiconductor? Which industry will be mostly you will be focusing? देखिए आपने एग्रीकल्चर की बात की, अगर एग्रीकल्चर में भी अगर रेवोल्यूशनाइज किया तो पंजाब ने किया. In 60-65, when the whole country was hungry, तो पंजाब fed the whole of the country.
और उसमें भी इनोवेशन हमारी इस हिसाब से हुई कि ट्रैक्टर्स, कंबाइंस, ये सारी की सारी पंजाब में बनी। और आज अगर हम बेंगलोर में बैठे हैं तो हमारे एरिया से भी कंबाइंस कम है फॉर हार्वेस्टिंग। सो उसको भी रेवोल्यूशनाइज पंजाब ने किया। नाउ विद ओवर ऑल दीज इयर्स पंजाब हैज प्रोग्रेस, पंजाब हैज मूव्ड ऑन। और अब आई थिंक इट्स हाई टाइम फॉर अस टू show the world that how Punjab can lead in AI and GCCs. Right. And another thing, when you're talking about how Punjab can lead in AI and other things, what is Punjab doing to make it easier for global companies to scale and invest? देखिए, एक तो मैंने आपको बताया कि जो हमारी पॉलिसी है which we introduced 6 months back, उसमें incentives, subsidies, they are class apart. Apart from that जो living standards हैं, वो अगर आप एक ही बात कर लें, अगर आप जैसे यहाँ पे आई थिंक बेंगलोर या हैदराबाद में विच नोबडी काउंट्स इज कि अगर ट्रैवल टाइम 3 घंटे जाने का 3 घंटे आने का वेस्ट हो रहा है और हेल्थ हैजर्ड्स हैं, तो वो शायद किसी बैलेंस शीट में नहीं आते, वो सिर्फ और सिर्फ आते हैं तो लाइफस्टाइल में आते हैं। सो वो हम ऑफर कर रहे हैं। हमारी कनेक्टिविटी चंडीगढ़ मोहाली एयरपोर्ट से IT सिटी विच इज अबाउट 1600 acres, so that is just 5 minutes. Yeah, that I have experienced myself. Roads are very good. So good healthcare facilities, good school education facilities, good lifestyle, good social circle. So हमारे पास है क्या नहीं वो बताइए आप। We have everything to offer. Right. And do you have any plans for data centers? Like abhi jaise everybody is focusing that when GCCs are coming and this high like new age tech is coming, you need computing power, so data centers. So states are equally focusing on data centers, coming up with data center policy. Is Punjab also thinking something like that? We are focusing on that also, and I think both the things they go side by side. So we are inviting all of them to Punjab. Right. So what are your future view when it comes to GCCs? How you gonna drive the GCC movement right at this point which is happening in India, in Punjab? If you can what are certain key pointers that you want to achieve in the coming years? देखिए, जब पंजाब की स्पेशली इन दैट केस मोहाली की बात करें तो आई कैन टेल वन थिंग विद अ कन्विक्शन कि आने वाले 4-5 साल में जिस तरह का एटमॉस्फेयर वहाँ पे हमारा स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है फॉर इन्वेस्टर फ्रेंडली, पंजाब इज गोइंग टू लीड द कंट्री. Our vision is that it should be seen as a Boston of at least Asia. और गवर्नमेंट का अप्रोच बड़ी क्लियर है. हमारा ये नहीं कि we don't want to tell or we are nobody to tell the companies or the investors what to do. Our job is to remove any kind of friction that comes their way. So जब इतना atmosphere investor friendly होए तो I think everything is possible. Right. And your expansion plan for tier 2 and tier 3 cities in Punjab? Like apart from Mohali and... Yes, for our showcase window is Mohali, then after that definitely Ludhiana and Amritsar. Right. I think that's all, sir. Thank you so much for your time.